Children, stand up, please. Stand up, all of you. Join your hands. Close your eyes. And please open your mouth and say the prayer. I want to see your lips moving. Okay? Shayan, you sit down because I can't see you. Achint, sit down. I can't see you. Yes. Close your eyes, all of you. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Ekagr, you were not saying the prayer. Yatharth, you were not saying the prayer. When you come back to school, you will be saying this prayer every day. Okay, children. Start rubbing your hands quickly. Quickly. Fast, fast, fast. Faster, faster, faster. Quick. Put them on your eyes. Put them on your eyes. Let them be there. Okay, again. Faster, 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 faster. Put them on your eyes. Let them be there. Ekagr, what are you doing, child? You should be looking at me. Faster, 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 faster. Rub again. Put them on your eyes. Stop. Okay. You are still standing now? Jump. Jump 10 times. Come on. Start jumping. One. No, who's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down. Sit. Now clap your hands 10 times. 1, 2, loudly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now clap quickly 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quickly. Okay. So we are all set now. Page. Open to page 18 of your literature book. Open to page 18 of your literature book. Open? Yes. Page number 18.
Opened all of you? Just wait for a minute, children. I'm sending you an image. I want you to see that image. Right? So that, okay. Now the name of the poem, this is a poem, this is not a story. The name of the poem is Cradle Song. And cradle का मतलब होता है वो झूला जिसमें स्मॉल बेबीज़ को मम्मी लोग लिटाती हैं या सुलाती हैं, जब बच्चे को सुलाते हैं तब के लिए. So now on page 18, children, you have this picture on page 18, right? There are 4 birds and their babies are given on the right side. First of all, pick up your pencil and pick up your scale, the small scale that you have. Okay? Yes. Now, as I have sent you the image, please match by drawing lines. Nabiha, why is your mic on? Please match by drawing lines. Quickly, I'm just giving you 2 minutes to draw lines. I have sent you the image. Please draw the lines. Nabiha, your mic is on. Please switch it off. Nabiha, your mic is still on. There is something wrong with your mobile or laptop, whatever you're using. Yes, ma'am. Don't say yes, ma'am. Your mic is switched on. Switch it off, please. Okay. Now, the image that I have sent you has the names of the birds. So, the first one is turkey. Please write the names. Please write the names as I have sent you as they are written in the image that I have sent you. Turkey. Then the next one is goose. Rooster. Third one is rooster.
And the last one is duck. Who is Siddharth Singh? Why isn't your camera on? मैम पेज नंबर कौन सा है? Who is Siddharth Singh? Why isn't your camera on? मैम विदुषी ठाकुर. Why isn't your camera on? Please switch on your camera. Page number 18. I have sent the image. Do that image in your book. Then now come to the next side. And Vidushi, when you're asking me the page number, please talk in English. Most of the time you're always asking me, मैम कौन सी book निकाले, मैम page number कौन सा है. Gosling, Holt, Duckling, Cockerel. I hope you've all drawn straight lines. Vidushi, switch on your... Acha, you can't. You must be looking at that. Tasmia, why are you playing with your hair instead of doing your work, child? You've written the names also? Have you written the names, Tasmia? Yes, ma'am. You have written the names also? I can't see in the image. Write the names of the birds and their babies, beta. You haven't written the names. I can't see the names. You haven't written the names. Write the names. Okay, ma'am. Yes, Mahira. Show, Mahira. Okay, good. Put it down. Put it down, beta. Ma'am, I have done. Who is this who said, ma'am, I have done? Please raise your hand. Instead of saying I have done, you just have to raise your hand. Yes, Sukunur. Okay. Abdullah, show. Show what you've done, Abdullah. Okay, good. Put it down. Okay, children. So, now please put your pencil down, all of you. Please put your pencils down. Let's start with the lesson. Put your pencil down. Now look at page number 19. Now this is a poem about what the mother tells her baby. That's a mother bird and then own mother. See, we all know
father is a man, mother is a woman, and a girl or a boy is a baby. Similarly, even birds have mother and father and babies, जैसा कि अभी तुमने इस वाले पेज 18 पे देखा while you were naming the picture and naming the babies. Hanifa, please put the pencil down. Now let's see. What does little birdie say in her nest at peep of day? Now छोटी सी चिड़िया है, little birdie, चिड़िया का बच्चा, सुबह के समय, what at the peep of the day, जब दिन निकल रहा होता है, when the day is about to start. What does the little birdie say अपने nest में क्या कहती है अपनी माँ से? She says, let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. छोटी बर्डी अपनी मम्मी से कहती है, मदर बर्ड से कहती है कि मम्मी मुझे फ्लाई करने दो, मुझे नेस्ट के बाहर निकल के फ्लाई करने दो. लिटिल बर्डी, एज तुम लोग जैसे नहीं होते हो जब छोटे होते हो, अभी भी तुम लोग छोटे हो, तुम लोग को घर से बाहर अकेले निकलना होता है, घर से बाहर जाना होता है, सब काम, मम्मी हम बड़े हो गए. वैसे ये छोटी बर्डी भी कह रही थी कि लेट मी फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट, मुझे नेस्ट के बाहर जाना है. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. नाउ मम्मी बर्ड कहती है कि बेटा थोड़ा सा और रेस्ट कर लो, थोड़ा सा और नेस्ट में अभी रहो, कुछ दिन और रेस्ट करो, तब तक कि तुम्हारे विंग्स जो हैं, तुम्हारे पंख जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब तुम अच्छे से उड़ सकोगे. यू विल बी एबल टू फ्लाई नाइसली. अभी योर विंग्स आर वीक, अभी फ्लाई करोगे तो यू विल गेट टायर्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई नाइसली. सो शी रेस्ट्स अ लिटिल लॉन्गर, देन शी फ्लाइज अवे. लिटिल बर्डी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड, बहुत अच्छा बच्चा है, अपनी मम्मी का कहना मानती है, तो वो कुछ दिन और रेस्ट करती है नेस्ट में, तो मम्मी उसको खाना ला के देती हैं, पानी ला के देती हैं, सब कुछ देती हैं. एंड देन व्हेन शी बिकम्स अ बिट स्ट्रॉन्गर, व्हेन हर विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर, उसके पंख जो हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, देन शी फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट, शी फ्लाइज अवे. नाउ अभी तो बर्ड का था, अब नाउ इट इज़ अबाउट अस, हम लोग इंसानों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में है. सी व्हाट इज़ हैपनिंग. व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे. नाउ क्रेडल जो है यहाँ पर देखो बना हुआ है, इस यहाँ पर जहाँ मम्मी पापा खड़े हैं, द बेबी इज़ इन द क्रेडल, बच्चों वाला झूला. यू कैन सी दिस. What does little baby say in her bed at peep of day? Now यहाँ पर हम लोग में से एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि सुबह सुबह जब दिन निकल रहा होता है, अपनी मम्मी से छोटा बच्चा कह रहा होता है कि baby says like little birdie, let me rise and fly away. Now जैसे बेबी बर्ड ने कहा था कि मम्मी मुझे फ्लाई करने दो, मुझे जाने दो, यहाँ पर बच्चा कह रहा है लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. यहाँ पर बच्चा विंग्स से नहीं फ्लाई करना चाहता है. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गेट अप एंड वॉक अबाउट, राइट. बच्चा जो है यहाँ पे फ्लाई करने का ये मतलब नहीं कि द चाइल्ड हैज़ विंग्स एंड शी वॉन्ट्स टू फ्लाई अवे. नो, शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द क्रेडल, शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बेड. क्रेडल से, बेड से बाहर निकल के वो दुनिया देखना चाहती है. दैट इज़ वाई शी सेज लेट मी फ्लाई अवे. बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर. मम्मी कहती है बेटे कुछ दिन और रेस्ट करो, कुछ दिन और सो आराम से, जब तक कि तुम्हारे लिम्स यानी कि तुम्हारे हाथ पैर, जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर स्ट्रॉन्ग नहीं जाते, टिल योर आर्म्स एंड लेग्स बिकम स्ट्रॉन्गर. अभी तुम छोटा बच्चा हो, अभी इफ़ यू गेट अप एंड गो आउट, you are weak, you will not be able to walk properly, you will not be able to hold things. So
sleep more, rest more, and then when you go become a little bit bigger, थोड़ा बड़े हो जाओगी, then you can come out and see the world. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. Now if she, like अगर बेबी मम्मी का कहना मान के रेस्ट करेगी, सोएगी, तो she will become stronger, her arms and legs will become stronger, and then कुछ दिनों बाद when she grows a little bit bigger, she can come out of the cradle and then she can see the world, and she can, as the poem says, fly away means she can go out and see the world. वो बाहर निकल के दुनिया देख सकती है. Now this poem, children, pay attention, pay very good attention, because ये pronunciation तुम्हें याद करना है और फिर पोएम का तुम्हारा टेस्ट एग्ज़ाम होगा. नाउ लुक इनटू योर बुक. जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वहाँ पे तुम्हारी फिंगर होना चाहिए. क्रेडल सॉन्ग, एंड देन पेज 19 देखो, पोइट का नाम लिखा हुआ है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. तो जब तुम पोएम याद करोगे, व्हेन यू विल लर्न द पोएम, यू विल लर्न लाइक दिस: क्रेडल सॉन्ग बाय अल्फ्रेड लॉर्ड Tennyson. I am repeating again. When you learn the poem by heart, you will be starting like this: Cradle Song by Alfred Lord Tennyson. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer, till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Baby, sleep a little longer, till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. Myra Tandon, pick up your book, better. Read the poem. Mic kholo, switch on your mic. Myra Tandon, switch on your mic. Read the poem, Cradle Song. What does No, Myra Tandon. Start with Cradle Song. Say Cradle Song. No, ये सब कुछ नहीं. जो मैं मायरा, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दो. सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो और किसी की मत सुनना. मेरे पीछे पीछे बोलो क्रेडल सॉन्ग. मायरा टंडन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. मेरे पीछे पीछे बोलो क्रेडल सॉन्ग. Cradle Song बाय As I said, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो और किसी की नहीं. बाय Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson. Again, Alfred Lord Tennyson. Okay, now read the poem, Myra.
Stop. Stop. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie rests a little longer till the little wings are stronger. So she left a little longer. Then she flies away. Stop. Myra Tandon, stop. Myra Fatma, continue. Myra Fatma. उसके आगे next. What does little baby say? Baby says, Oh, you have left the second line. Second line. in her bed at peep of says, little birdie, let me and fly away. Stop, Myra. Baby, Myra Fatma, stop. Myra Fatima, stop. Myra. Myra Fatma, stop. Myra Fatima, stop. stop. Ekagr, continue from there. मुझे नहीं पता baby says, in her bed at peep of day. Baby says, like No, Ekagr, you were not paying attention. Stop, Ekagr. Advait, can you continue, please? From where Myra Fatma left. What does little birdie say? No, beta, you are not. No. Stop, Advait. Stop. अक्षता यादव, जहाँ से माहिरा फातिमा ने छोड़ा है, स्टार्ट फ्रॉम देयर प्लीज. यस अक्षता. Baby sleep. Good. Baby sleep. Little. Hanger. Till. Till the little. Till the little limbs are stronger. Stop, Akshita, stop. Arsalan, continue. If she sleeps, his wing hips a little longer. Baby to Shall fly away. stop. Good. Children, you have to learn this poem. This period is over. We are meeting again in the next period in 10 minutes. Be ready with your maths book, please.